रेंजर्स फुल जो राइट किट के साथ खड़े हैं मेरी इस्तकबाल के लिए। आज मुझे नैब ने बुलाया था, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पार्टी वालों का। मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हमारे पंजाब कहते हैं फॉर्मर चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि साथ आएंगे। मैंने कहा नहीं जी मैं चला जाता हूँ, उन्होंने कहा नहीं जी हम आपके साथ ज़रूर आएंगे। उनको भी इन तारों के पीछे खड़ा कर दिया। मैं जाके तकरीबन 1.5 घंटा ठट्टा शुगर मिल के हवाले से मुझे बुलाया था और उनकी जो सवालात थे उनके मैंने जवाबात दिए। मेरे ख्याल से तो मैंने जो सवालात थे, जो उनकी क्वेश्चंस या क्वेरीज थी, उनके प्रॉपर जवाब देखे। हम उनको साथ साथ ये भी बताया कि अगर आप GIT पे एतबार करके आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं तो GIT के अंदर जो कोर्ट की जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि GIT के वकील ने, अगर आप पैरा 35 पढ़ लें उस GIT का, सॉरी कोर्ट की जजमेंट का 7 जनवरी 2019 की जजमेंट का, उसमें GIT के वकील ने कहा है कि हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह के खिलाफ वो अंग्रेजी उसकी थी सही कंक्लूजन, हम नहीं सही कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमें और इंक्वायरी करनी है। तो इसका मतलब ये था कि जो कंक्लूजन ड्रॉ की है वो गलत है और मैंने इस चीज़ पे ज़रूर अपना किया कि जी जब कहते हैं कि गलत कंक्लूजन है और मेरा जिस दिन GIT आई उस दिन से मीडिया ट्रायल जो चल रहा है लिखा हुआ है उसमें GIT का वकील कहता है कि गलत कंक्लूजन है, हम कोई कंक्लूजन प्रॉपर करेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आ सके, फिर भी मेरा जो मीडिया ट्रायल और ये चल रहा है और आज पहली बार मुझे बुलाया गया। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार था कि मेरा मौक़िफ़ भी लिए। मैं 1.5 घंटा उनके सवालात के जवाब देके आया हूँ। आगे जो प्रोसीजर होगा मैंने उनसे कहा कि हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, इसलिए कि ये जो मुकदमात हैं और GIT रिपोर्ट है ये झूठ पे मबनी है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। ये ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी बिलावल बेकसूर हैं और किसके कहने पे उनका नाम डाला गया, उसके बाद भी आगे चल रही है बात तो कुछ मैलाफाइडी नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मैं नैब को यकीन दिला के आया हूँ कि मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूँगा उनकी इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सामने। ये बताइए कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज भी इसी तरह की एक GIT से गुजर चुकी है और मुस्लिम लीग नवाज जब उनको सजा हो गई तो हमने देखा कि उन्होंने बाद में कुछ इल्ज़ामात भी आयद किए। आप ज़ाती तौर पे अपनी गुफ्तगू में बड़े मुतमईन नज़र आते हैं ऑन द फेस ऑफ इट कि जो GIT है इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है। आर यू सेटिस्फाइड कि इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है? कोई व्हाट्सएप कॉल तो नहीं आ रही, कोई इधर उधर से इन्फ्लुएंस तो नहीं है? आपकी ऑब्जर्वेशन। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आपने कहा GIT तो गुजर चुकी है, CIT है, ये पता नहीं ये NAB की जो है। सबसे पहले तो जो GIT उसके बारे में तो मैंने कहा कि GIT ने खुद एडमिट किया कि हमारे पास सही कंक्लूजन, ये पैरा 35 पढ़ लीजिएगा, पहले 3 सेंटेंस से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी बिलावल साहब के लिए और मेरे लिए जो GIT ने खुद कहा है। उसके बावजूद NAB का कहना था कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म आया है, हम इसलिए इन्वेस्टिगेट करें, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो रही है NAB की तरफ से, आर यू सेटिस्फाइड? मैंने तो अभी पहली बार आज अपीयर हुआ हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई ये उनकी तरफ से। सीएम साहब आपने एतराज़ नहीं उठाया, आप सिंध के CM हैं और यहाँ दिल्ली में केस आपका चल रहा है, आपकी क़यादत का चल रहा है, तो आप ये इतराज़ ऑलरेडी मैं उठा चुका हूँ। मैं रिव्यू में गया था, कोर्ट में मैंने कहा था और मुनासिब यही होता कि देखें आज यहाँ पे मैं आया हूँ, अपने जेब से खर्चा करके आया हूँ, बाकी वज़रा आए खर्चा करके, और मेरी वजह से तो मैंने कहा ना 1000 के करीब पुलिस वाले विद राइट गियर, ये खर्चा जो बर्दाश्त किया है। कराची में होता तो मैं खामोशी से जाता, फिर होके आ जाता। जुरिस्डिक्शनल इश्यूज जो हैं वो हमने पहले रेज किए हुए हैं, वो अभी तक मौजूद हैं। जब भी समाअत होती है तो एक तासुर दिया जाता है कि अहम गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, वफाकी उज़रा की जानिब से भी बात की जाती है। आज आप खुद नेब के रूबरू पेश हुए, तो आप समझते हैं कि केस इतना मजबूत है कि आने वाले दिनों में कोई अहम गिरफ्तारियां होंगी? मेरे ख्याल से, मेरी ओपिनियन, ये केस बिल्कुल कमज़ोर है सारे के सारे। बाकी फेडरल गवर्नमेंट तो जिस दिन GIT अनाउंस हुई थी उन्होंने तो सारा तैयार कर लिया था, डेट्स भी दे दी थी, अपने
मीटिंग्स भी शुरू कर दी थी। वो मैलोपाइटी मेरा ख्याल है उनकी मिच्योरिटी है कि वो ऐसा सोच रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि केसेस में कोई ऐसी जान है कि वो ज़्यादा प्रोसीड कर सकें। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, नैब करेगी। मैं नैब से ही उम्मीद करूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं। देखें, इधर इन्वेस्टिगेट करना पिंडी में, जबकि केस के सारे लोग कराची में मौजूद हैं। जो अलेज्ड क्राइम जिसे कह रहे हैं वो भी कराची या सिंध में हुआ है। और जो पिंडी में लाके करना, पिंडी से हमारे पुरानी एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल है नैब को थोड़ा अंडर प्रेशर करती है। एक मिनट मैं एक छोटी सी गुजारिश मैंने पहले भी की है, आपसे फिर कर लूं। अभी सारी रिपोर्ट चल रही थी, सीएम साहब अंदर गए थे, अंदर से कोई खबर बाहर नहीं आ सकती थी। आपके कुछ चैनल चला रहे थे, बड़े सख्त सवाल किए गए सीएम साहब से। आप जरा गौर कीजिए, वो खबरें क्या नहीं, मेरा हम सवाल और है सीएम साहब, मेरा सवाल और है, आपसे सवाल है कि क्या वो खबरें नैब वाले अंदर से दे रहे थे? थी नैब के अंदर है। थैंक यू, यही हम चाहते थे। आपने एडमिट कर लिया ना, चलो ठीक हो गया। शाह साहब ने क्या शाह साहब जो है वो आज कराची से गिरफ्तार किया है और 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पे लिया है, तो इसका आप क्या समझते हैं? मुझे पर्सनली इत्तला नहीं है। मैं नैब के हवाले से आप कोई एतराज नहीं कर रहे हैं क्योंकि जुरिस्डिक्शन आपकी सिंध से इधर आई है, तो ऑफ कोर्स चेयरमैन नैब है, तो आप चेयरमैन नैब के जो रोल है और नैब के हवाले से तो बात कर रहे हैं, चेयरमैन नैब के रोल के हवाले से आप सेटिस्फाइड है? कोई रेफरेंस दायर करने का इरादा तो नहीं उनके बारे में? देखिए, मेरा तो कोई रेफरेंस दायर करने का पर्सनली इरादा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए था। और चेयरमैन नैब को तो हम कह चुके हैं। एक रिसेंट एक मामला हुआ था स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का, उसमें तो हमने खुद असेंबली ने रिक्वेस्ट की है कि चेयरमैन नैब इंक्वायरी करें। वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि अगर उनके नीचे का स्टाफ कोई नाजायज़ी करता है तो उसकी वो खुद इंक्वायरी करें। हमने ये नहीं कहा कि हमें दें इंक्वायरी, हम करेंगे। हमने चेयरमैन नैब से ही कहा है। उम्मीद है कि वो ये बता दें कि क्या नैब ने आपको कोई सवालनामा भी दिया है, कोई जवाब जमा कराने हैं आपने? सवालात आपको थमाए गए हैं जिस तरह से पहले 10 दिन देखिए, मेरी बात सुने, उन्होंने जो मुझसे पूछना था वो उधर ही पूछ लिया है। उसके अलावा एक क्वेश्चनेयर जो था वो दिखाया है मुझे, यह है। और इस केस में उन्होंने नहीं मुझे कहा कि दोबारा बुलाएं। इस दफे इस केस में नहीं कहा कि दोबारा बुलाएं। थैंक यू। Corruption and have accountability. So it's all so much in sync with the way we as a government and as people are thinking. That's very encouraging. But the most interesting and the most encouraging piece of news is that after exchange of so many drafts and lots of squabbling, we have finally agreed, Pakistan and the European Union have finally agreed on a new strategic engagement plan. And that's a real plus from the discussions we've had. Hopefully, once the procedures are fulfilled on the European side, I would be more than happy to hop onto the plane and go to Brussels and sign with you, ma'am, the new Pakistan-EU strategic is laying the architecture for a future, a bright future between Pakistan and the European Union. There are lots of Pakistanis spread all over Europe, contributing to socio-economic development of your member states. Very useful Pakistanis, contributing a lot to us through their remittances. So we have a bridge between us that is generating goodwill, and we can build on that further. We also, in our discussions, I shared with the High Representative Pakistan's point of view and the steps that we have taken vis-a-vis FATF, how we intend to fulfill our obligations and political commitments to the international community.
I also shared with her the evolution of the National Action Plan and how the Peshawar tragic incident or the watershed in the way people in Pakistan dealt with terrorism and extremism, and what the Pakistan Armed Forces have done in cleansing the tribal belt, and the new political consensus that has evolved. We also had a good discussion on the status of INGOs, the perception and the reality, and I shared with the High Representative what initiatives we had taken, and some of the anxieties, I hope, after the discussion we've had, would settle down, and they would feel more comfortable in working in Pakistan. I also shared with her how German political foundations, through negotiations and talks, have now been incorporated and have been registered, and how 75 of INGOs are already registered and are working in Pakistan, and we are working on others as well. And lastly, we had a very good discussion, and we shared and compared notes on Afghanistan. As you know, the European Union has been a great contributor to Afghanistan's reform and reconstruction agenda. They also, like us, have a stake in peace and stability in Afghanistan. So we shared Pakistan's perspective, Pakistan's role of facilitation in the peace and reconciliation process, and where we stand on that at the time. I also gave her an overview of our government's thinking vis-a-vis our eastern neighbor, that's India. How open we were, how open we are in engaging with them to resolve our outstanding issues through a sustained dialogue.